Hi everyone, welcome back to my channel. So in today's video I'm gonna show you how I remove my body hair, how I remove my hands, my legs, my unwanted body hair. So this video is gonna be all about the procedure, how to use razor, and that razor is Gillette's razor. I just used it for very first time and even मैंने tutorials देखे, कुछ videos देखी, उसके बाद I got to know कि इसको इस तरह से razor को use किया जाता है. Okay, let's see, use करके देखते हैं. And I'm gonna share my honest review. That was really very easy to use that razor. It's so soft while you are using it. It's so soft on your hand, but sometimes your hand can cut, your leg can cut, especially your elbow, your knee can definitely cut. So for that you have to use some precautions before using this razor, and that is the whole process is going to be all about. And yes guys, I know it was my 3 or 4 months growth on my hand, on my legs, and it's not just like कि इतने months में I get waxing or I remove my body hair. That's not it. The reason behind it is that I wanted to show you how I remove my hair and how I'm gonna use the razor to my video. So yeah, इसी वजह से 3-4 months की growth दिखाने के लिए मैंने कोई waxing, कोई कुछ नहीं कराया था अपने hands और legs पे. So आपको देखने मिलेगा कि इतने सारे hair मेरे hands पे, like the hell. Seriously, and please don't make my fun. It was just my honest review, my honest video just to share with you guys, and I don't know what will be your reaction, what will be your कि इतने सारे dirty hair एक साथ कैसे. Oh my god, but I had to do it just for you guys. I had to do it. So let's start this video without wasting much time. So guys, इस वीनस रेजर की पैकेजिंग कुछ इस तरह से होती है और ये इजीली अवेलेबल होता है मार्केट में इन जस्ट ₹60. और इसको यूज करने के 3 स्टेप्स भी दिए जाते हैं इसके रैपर पर, एज यू कैन सी राइट हियर. और फिर भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगी 1 2 3 ऑल द स्टेप्स, किस तरह से इसको यूज करना है, क्या अप्लाई करना है, और देन इट विल बी इजी फॉर यू. गाइस, आपको कभी भी रेजर को डायरेक्ट यूज नहीं करना है. सबसे पहले आपको अपने हैंड को वेट करना है पानी से. उसके बाद गीला करने के बाद इस पर कोई भी कंडीशनर या फिर शावर क्रीम अप्लाई कर लेनी है, सो डैट कहीं भी कट ना आए और आपका रेजर स्मूथली चलता रहे. और अगर आप ये सब यूज किए बिना डायरेक्ट रेजर यूज करोगे तो कट आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, प्लस ड्राइनेस भी बढ़ जाती है. तो ड्राइनेस और कट को इग्नोर करने के लिए बेसिकली आपको कोई भी कंडीशनर या शावर क्रीम यूज करनी है. एंड देन आपको अपनी ग्रोथ के अपोजिट डायरेक्शन में रेज़र को यूज़ करना है. और इस तरह से अगर आप रेज़र यूज़ करेंगे तो यू विल गेट टू नो कि आपका रेज़र बहुत स्मूथली चल रहा है और हेयर रिमूव हो रहे हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो. लाइक आई हैड लॉट ऑफ हेयर ऑन माई हैंड्स बट आई रिमूव्ड इट जस्ट विद रेज़र. और रेज़र इज़ अ सेफेस्ट वे अगर आप इसको अच्छे से यूज़ करना जानते हो तो. और इसका सही टेक्निक यही है कि पहले आप कुछ ना कुछ अप्लाई करें, देन इसको यूज़ करें. And you can see how easily it is removing my arms here, and you can see इतने सारे hair. I mean कैसे बस रेजर से रिमूव हो सकते हैं इजीली. तो आप भी ट्राई करिएगा. ये बहुत ही चीपेस्ट होता है ये रेजर यूज करना. इट्स कॉस्ट इज लाइक ₹60. तो आप यूज करके देखिएगा, बट इसी तरीके से जिस तरीके से मैंने आपको बताया है. It's not a game, it's a rich thing.
एंड देन सेम प्रोसीजर मैं यूज कर रही हूँ अपनी लेग पर। फर्स्ट वेट करा है, देन उसके बाद मैंने कंडीशनर अप्लाई किया है एंड देन उसके बाद मैं रेजर यूज कर रही हूँ। और लेग पर तो मेरे इट वाज लाइक अनएक्सपेक्टेड हेयर ग्रोथ, बट दैट्स ओके। And razor is the safest way to remove this much hair growth, as I said before. And yeah, I just did it really well. एंड इसके बाद मेरे नी पर थोड़े से हेयर रह गए थे तो मैं वो भी रिमूव कर रही हूँ। एंड देन उसके बाद अपने लेग को अच्छे से वॉश कर लेना है। And the last thing you have to do is you have to apply moisturizer on the area where you have used razor, because moisturizer can heal that portion and dryness को भी कम करेगा वो आपके उस एरिया से जहाँ पर आपने रेजर यूज किया है। और प्लस आपके आर्म्स को, आपके लेग्स को सॉफ्ट भी रखेगा मॉइस्चराइजर। आई रिकमेंड यू कि आप रेजर यूज करने के 1 वीक तक आप मॉइस्चराइजर जरूर यूज करें। And yeah guys, I really know I didn't feel shameful while recording this video, because I know and you all know that everyone has body hair, everyone remove unwanted hair, everyone does that. So why should I feel shameful while recording this video, while uploading this video? And last thing I wanna say is, if you liked my video, then give this video a big thumbs up, share it, and also do comment and subscribe my channel. And I will see you guys next week in my next video. Till then, take care, bye bye. And also you can learn this makeup look in my next video. So for that you have to subscribe my channel. Bye bye.